So if the minus 5 0 term, we replace x with minus x, it will equals to the 0 to 5 term. Yes. You can see when limit goes from minus 5 to 0, it is minus 1 plus x. But Yeah. you are getting 1 plus x, right? Yeah. तो सेम चीज तो नहीं है. दिस इज नॉट इवन. नेगेटिव एफेक्ट नहीं. नेगेटिव एफेक्ट कब होता है? जब ऐसा होता है. दिस इज एफेक्ट एंड दिस इज माइनस साइन. नेगेटिव एफेक्ट. तो नॉट ऑड ऑल्सो, राइट? समझ गया ना? Yeah. यस. तो 1 by pi integration of minus 1 is minus x plus x square over 2. Putting 0, you will get 0. Minus minus plus 5. So a0 is 0, right? Now find an. Okay, ये आ जाएगा minus pi to 0. Then 1 plus x sin n x. Sin part is always 0. Second square common. Cos 0 is 1 minus cos n pi. Now you put minus minus plus cos n pi minus cos 0. Okay, you are again getting 0. तो a0 and an0 चेक करो. 0 आ रहा है क्या तुम्हारा? Getting same thing? Okay. Now we find bn. Okay. So that means it's a odd function. Sorry. You odd something over. Odd function कैसे है? Odd function नहीं है. Odd function कब होता है? When fx is f minus x is equal to minus fx. तो minus fx कब होगा? When you will get 1 minus x minus 1 minus x, right? But minus common, so it's uh, like minus f1 equals to f2. नहीं, when you take minus common, you will get minus 1 plus x. But the second function is 1. हाँ, तो second part will be 1 minus x होना चाहिए था.
नहीं समझे? नीचे का पार्ट तो 1 से करता है। नीचे का पार्ट इज 1 + x विथ नेगेटिव साइन, नो प्रॉब्लम। 0 to π, राइट। 0 to π के लिए सेम है, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है, बट ये क्या होना चाहिए था? 1 - x होना चाहिए था ना। 1 - x मिल रहा है क्या? तो दिस इज कमिंग होल, मतलब माइनस मल्टीप्लाई द होल ऑफ 1 प्लस एक्स। बट व्हाट अबाउट फर्स्ट वन? व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव, यू विल हैव टू 1 - x। तो 1 - x मिल रहा है क्या इधर? For checking, can we just have to replace x with minus x, not multiply minus x? Yeah, for checking, replace x with -x. That's why मैं green कलर से कर रहा हूँ. I replace x with -x here, right? Now when you take common, it becomes 1 + x. When you take common, minus, it will be -1. Right, right. This is odd function. मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया था. Okay. Okay. That's why it is odd function. That's why you are getting a0 and 0. Yes. मैंने इधर एक साइन भूल गया. Okay. So this is an odd function. जब odd function है तो we will find only bn part. अगर a0 an still you are finding, it will get 0. Yes. Okay. Yes. So we find only bn. Bn will be 2/π, 0 to π, fx sin nx. 0 to π fx is 1 + x. Sine part is 0. Put π. Now put 0. Or 0 is 1. Minus -1 raised to n, minus +1. Okay. This is your bn. अब इसको सीरीज के फॉर्म में लिख दो. You know 0 to 2π का फार्मूला क्या होता था? nx
Cn sin nx, राइट। यहाँ पाई रिप्लेस्ड बाई एल, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? वेर एवर यू हैव कॉस और साइन, पाई का रिलेशन किससे होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। Yeah. तो जहाँ कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लाइक कॉस या साइन, वहाँ एन पाई एक्स अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर देना। Yeah. ओके, एंड यू नो व्हाट इज ए जीरो? जीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पाई की है एल लग दो। And So here you will write 1 upon L 0 to 12 fx cos n pi x over L, right? yeah. तो बस इतना सा ही डिफरेंस है। ओके, अब L is any constant. Let's suppose limit is given 0 to 1, let's suppose 0 to 2, तो इसको किससे कंपेयर करना? तो वैल्यू ऑफ L इज 1, तो जहां कहीं भी L है वहां 1 रख देना। दिस इज ए जीरो। तो फाइंडिंग ए 1 अपॉन 1 इज 1, ए एन क्या हो जाएगा? 0 to 12 बिकॉज 1 अपॉन 1 इज 1 cos n pi x, right? Yeah. This is 2 to L, right? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए, 0 से 2, 0 से 3। इफ 0 to 3 is given, then you can compare with 0 to 2L. L becomes 3 over 2, right? Yeah. नोट कर लो इसको, फिर मैं ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। So L का इसमें दो की लिमिट्स है, 0 to 12 है, minus L क्या है? This nothing है, 0 to 2L, हाँ सॉरी, and minus L क्या है? हाँ दे आर सिमिलर टू 0 to पाई एंड माइनस पाई टू पाई। अभी देखो 0 से 2 पाई और 0 से 12 में कितना डिफरेंस दिख रहा है? नथिंग, ओनली, यस, ओनली पाई, वेर एवर यू है पाई, हाँ वहाँ एल लग दो। बस वन इम्पोर्टेंट थिंग Other than रिमेम्बर, these two, there's nothing else. हाँ यहाँ पाई बाई एल मल्टीप्लाई हो जाएगा इन साइन एंड कॉस टर्म, राइट? इसलिए मैं Yeah. सामने सामने लिख रहा हूँ so that you can see very clearly. Okay, Yeah. can we move? Yes. See, this is first question directly given 0 to 2L. No need to compare with 0 to 2L. L is L, right? And no need to Yeah. check odd even function. Check odd even function only when limit is minus pi to pi or minus L to L. Okay. Okay. So if we are not checking odd or even function,
we can start directly finding a0. अच्छा, सी वन इम्पोर्टेंट थिंग, जब मैं फार्मूला लिखता हूँ तो यहाँ मैं a0/2 लिखता, नहीं, करेक्ट, दिस इज करेक्ट. ओके, so what is the value of a0? 1/0 Yes, to 12. a0 is 1 over l, 0 to 2l, fx. Yes. You cannot go from 0 to 2l directly. First you have to go 0 to l. Then from l to 2l. Integration of x square 0 to l, 2lx minus x square by 2. 2 into 2, 4l square minus 2l square minus minus plus l square by 2. Right? Yeah. Okay. On simplifying we get l square by 2, 2l square only l. Yes, l is the correct answer. Okay. Okay, अब हम फाइंड करेंगे ए एम. 2. Yes, done. Now we find what? Yeah. A n. One upon l, 0 to 2l, fx cos n pi x over l. Okay, so 1 over l, 0 to 2l. First we go 0 to l. When we go 0 to l, fx is x, and then from l to 2l. Right? Okay. Use UV rule here. So when you use UV rule, you will get sine n pi x over l. This is whole thing.
अपॉन n पाई ओवर l माइनस डेरिवेशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस n पाई. Okay, and first limit is goes from 0 to l. Similarly, use UV rule here. So when we use UV rule here, you will get 2l 2l minus x sine. Then derivation of this will be minus 1, right? Yeah. Minus cos x. And limit from pi to 2 pi. Always replace this part will be 0. See, there are two minus, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. Yeah. Upon n square pi square upon l square. माइनस 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 3 टाइम्स माइनस है. इसका लिमिट क्या है? 0 टू l. pi to 2, sorry, this is l to l. Okay, not pi. Okay, दोनों में कॉमन क्या है? n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर को मैं ऊपर ले लेता हूँ, राइट, इन न्यूमरेटर. ओके, अभी मैं क्या करूंगा? फर्स्ट वी पुट l. व्हेन यू पुट l, l l कैंसिल हो जाएगा. Yeah. तो यू विल गेट cos n pi. Cos एंड नाउ पुट 0. ये पूरा 0 हो गया तो cos 0 इज 1. 1. दिस इज फर्स्ट लिमिट. माइनस, जब मैं 2l रखूंगा यहाँ तो l l कैंसिल, cos 2 n pi हो जाएगा, राइट. ओके, now when you put l you will get cos n pi. Okay, 1l cancel, cos n pi, cos 0 is 1, cos 2 pi is 1, cos minus minus n pi. तो ये कितना हो गया? डबल हो गया ना. cos n pi is right. Right, now you can change into odd or even function. If n is even, then it is 0. If n is odd, so for n is even, right. Yeah. यहाँ तक नोट कर लो. Now can you find bn?
मतलब यानी जीरो. Yeah, correct. Okay. When you put a zero here, you will get a zero, and here you will get 12, right? So they are not same. If they are not same, they are discontinuous. अगर discontinuous है तो इनका एवरेज लेंगे. Part it accept part. Okay.
So this for checking this can be doing only substitute one value and check. You put only one value. How can you check? You are checking discontinuity at 0. At zero. Yeah. So putting 0, you are getting 0 here. Okay. You can also check by drawing a diagram. When x goes from 0 to L, this is a line. And when x goes from L to 2L, so you will get line like this. Okay. So you can see ये discontinuous है इससे. कैसे पता discontinuous है? At 0 there is no equal sign. Okay. तो यहाँ ये होल रहेगा ऐसा. This point will 0 is not included in the function. तो 0 पे discontinuous रहेगा. And 12 पे भी discontinuous रहेगा. तो कंटिन्यूटी तब होता है जब यहाँ इक्वल का भी साइन होता है. ओके, ये चीज याद रखना. अगर यहाँ इक्वल का साइन होता है तो दे आर कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट, राइट. Yes. दे आर डिसकंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट. एंड पॉइंट मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ओके. Yeah. So 2 pi कहाँ? Why do we take 2 pi? 2 पाई वहाँ 2L है एक्चुअली. बाय मिस्टेक दे टेकन 2 पाई. So we're supposed to write 2 pi. No, no, put there L. This is by mistake. 2L is there. Fx is x, right? And this is 2L minus x. Don't try 2 pi. This is 2L actually. Printing mistake is there. Okay. So f of 0 will be what? 0, right? Yes. F of 2L will be 2L minus 2L is 0. If you put 2 pi, then you will get 2L minus 2 pi, which is not 0, right? Yes. So we first check what range the x value you are assuming, and then we take that function. Okay, so when x is 0, we take the first function. Yeah. When x is 12, we have to take 12 and 6. Right. Because value of x lies here, right? And 2L lies in second function. Okay. Yes.
This is same question, similar question, right? Yeah. So you can do this, right? Yeah. So I skip this. See this question. Here find the Fourier series of periodicity 3. 3 means what? T plus 3 is equal to T. तो अगर क्वेश्चन में ये चीज दिया है तो डोंट कंफ्यूज, दिस इज सेम थिंग। जो इसका मतलब यही है कि ए फंक्शन विथ पीरियोडिसिटी 3। ओके, so whenever pi is not given in the limit, always compare with 0 to 12, with 0 to 3. So 2l is equal to 3, so l becomes 3 by 2, right? Now find a0, a and bn. Can you try this question? Yeah. Because this is different question. Total. So in these kind of questions, you have to substitute the value there. Yes. L is 3 by 2. यहाँ 2l है तो यहाँ 3 रखेंगे। टू कैंसिल, 9 minus 27 by 3, which is 0. So a0 is 0, right? अब हम an फाइंड करेंगे। an फाइंड करो इसका। इधर आओ। What is an?
सेकंड से। ओके So this is neither odd nor even. नहीं, ऑड इवन तभी चेक करना व्हेन लिमिट इज -π to π, यहाँ -L to L।